हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हो आप सब? तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक पाइथन के ऐसे आईडी के बारे में जिसमें उसकी सारे काफी फीचर्स अवेलेबल हैं, जो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए वो हेल्पफुल होता है, राइट। उस आईडी का नाम है पाईचार्म। जी हाँ, एक्चुअली जो उसमें फीचर्स जो अवेलेबल होते हैं वो एज अ बिगिनर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, राइट। लाइक उसमें जो है इंटेलिजेंट कोडिंग असिस्टेंट्स अवेलेबल होते हैं, जो जब आप कोडिंग कर रहे होंगे तो उस दौरान आपको वो काफी सारे सजेशंस प्रोवाइड करते हैं, राइट। साथ साथ उसमें डेवलपर्स टूल भी अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट उसमें वेब डेवलपमेंट की भी चीजें होती हैं अवेलेबल। साथ ही साथ आप उस आईडी को कस्टमाइज कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, राइट। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि हम उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट, अपने सिस्टम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम में ब्राउजर ओपन करेंगे एंड जस्ट टाइप हियर पाईचार्म, क्लिक एंटर, राइट। जो फर्स्ट ऑप्शन है हम उस पर क्लिक करेंगे, www.jetbrains.com, राइट। जी हाँ, ये खुल गया। नाउ जस्ट क्लिक ओवर हियर, डोंट क्लिक हियर, राइट, बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल वर्जन, राइट। तो ये एक्चुअली ये प्राइस बेस्ड होगा, राइट। तो वी आर गोना फॉर द फ्री वर्जन, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो आप विंडोज के लिए भी अवेलेबल होते हैं, मैक ओएस के लिए भी ये अवेलेबल है आईडी, साथ ही साथ लिनक्स के लिए भी अवेलेबल होता है, राइट। और हर ओएस के लिए यहाँ पर दोनों वर्जन्स अवेलेबल हैं, दैट इज द प्रोफेशनल एज वेल एज फॉर कम्युनिटी, राइट। For community we will go for the community because community is free open source, right. And for professional we will get 30 days trial, and for rest it will be paid, right. So we'll go for the community only, right. Just click over the download button and the download will begin. And now once the download is complete, you can see the PyCharm icon or software in your download folder or desktop folder or wherever you have downloaded that, right. So now just double click over here and just give the administrative privileges whatever they are asking. Now just click over the next button. See, you must have at least 1.4 GB space, right, in your hard drive, right. Wherever you are installing the software you should have at least 1.4 1.5 GB space, okay. Just click over the next button. Now here we have options available. Create desktop shortcut. So do you want to create the desktop shortcut of PyCharm? So I'll select yes. Update context menu. Add open folder as project. Okay, I'll select that, right. And the last one is create association for .py, right, .py. So for this I won't select, right, because I have some other folder as well, I have some other program files as well which I want to open with the Anaconda, right. So I won't. You must have seen the Anaconda installation video, right. मैं इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर मैंने दिखाया है कि आप एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को भी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, एज अ पाइथन आईडी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो के एंड पे भी दे दूंगा, राइट। तो वहां से भी आप देख सकते हैं, पूरा एक फुल डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है एनाकोंडा को लेकर, राइट। नाउ क्लिक ओवर द नेक्स्ट बटन एंड जस्ट क्लिक द इंस्टॉल. You can click here the show details. Now it will take some time to install since it is a large software. As a beginner,
पाइचार्म जो है आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है, राइट। पाइचार्म पर जब भी आप कोडिंग करोगे यू विल फाइंड कि वो जो है आपको एक कोडिंग असिस्टेंट को प्रोवाइड करता है ये सॉफ्टवेयर, राइट। और साथ ही साथ उसमें कई सारे डेवलपर टूल्स है, कस्टमाइजेशन टूल हैं, जिसको आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है एज अ बिगिनर अगर आप हो तो। इनफैक्ट ऑन एडवांस लेवल भी आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। Now the installation has been done. Click over the run PyCharm and click finish. Now the PyCharm software will open. Yeah. So you can start from here by clicking over the new project, right. Just click over the new project. You can name it whatever you want, right. Just name the project from which you want to start, right. You can choose any name, okay. And here you can choose the base interpreter, okay, like which Python you want to use, the version 3.9 or version 3.10, right. You can choose whatever you want and click over the create button. Now it will download the Python 3.10 version. It will take few time as well. It will download the Python 3.10 version, right, so that they can provide the features which are available in that version. Okay, I'll fast forward the video for saving your time. So now the Python has been downloaded and installed. It will ask some privilege rights, so just provide it. Now the Python has been installed and we have started the PyCharm software, right. So just click over here on the file and you can create the new project with any name, okay, but we have already created with my name, right, Krishna. So from here now just delete all this and type. See, here you can see, as I told you, Python will provide you whatever you are typing, any syntax, right. Python will provide you the PyCharm. The PyCharm will provide you the coding assistant, right. Whatever you are typing, since I was about to type print, right, and it has already showed me the assistant for that, right. Just click over the run button here. See, if you want to create again new project or you want to some other project, just click over the file option, click new project, just type your new project name here, right, and just click over the create button. You can choose whether you want to create your new project in the same window which is open right now or you want to create in another window, right. So a new window will again open for that. I'll create in the same window. Now our IDE is preparing and it's done. Okay. If you are a beginner तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये सॉफ्टवेयर, राइट.
सबसे बड़ी चीज कि ये असिस्टेंट आपको प्रोवाइड करता है, राइट? कोडिंग असिस्टेंट, वॉट एवर यू आर टाइपिंग फॉर दैट, राइट? सी, एनीथिंग, वॉट एवर you will type, it will provide you assistant for that, right? So I hope this video will help you out. So this is all for today. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe the channel.